Here is your math teacher Sanjeev Sikri. Today I will discuss with you a question from rationalization for standard 9 chapter 1. So let's read the students question. It's 2 over 2 root 2 plus root 5 minus root 3. So once you observe it, you will think we have not done this type of rationalization before. So students, it's a special type of rationalization. The earlier which you have done, in those questions the denominator was containing 2 terms only, but here we are getting 3 terms are there in denominator. So how to solve it? By rationalization. Students, इसमें जो सबसे पहला स्टेप ये है कि इन तीन टर्म्स हैं, दो को आपने कंबाइन करना है और एक को सिंगल रखना है. नाउ हाउ कैन यू कम टू नो कि आपने दो कौन सी कंबाइन करनी है और कौन सी सिंगल रहेगी? उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं. आपको जो भी तीनों टर्म्स गिवन है, यू अप्लाई स्क्वायर ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स. 2 रूट 2 स्क्वायर, 2 रूट 2 स्क्वायर करेंगे, 2 square will be 4, root 2 square will be 2 and you will get 8. I hope it's clear. Then square करेंगे root 5 square, it will be 5 only, and then is root 3. Irrespective of the sign, plus minus I ये नहीं आपने लेना है, आपने सिर्फ टर्म लेनी है. Square करेंगे it will be 3. So after squaring, you will observe a pattern in these 3 terms. Which pattern you are observing? 3 plus 5 gives you 8. 3 plus 5 gives you 8. That means the sum of 2 terms will be equal to the third term. तो यहीं से आपको आइडिया मिलेगा, जो दो टर्म का सम तीसरे के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये वाली टर्म सिंगल रह जाएगी और ये दोनों कंबाइन कर जाएंगी. सो आई होप आपको मैथ कंसेप्ट पता चल गया, आपने कैसे कंबाइन करना है दो को. 2 एज इट इज. जो दो कंबाइन करनी है स्टूडेंट्स, मैं उनको आगे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में. कंबाइन होगी, पीछे लिख लोगे इवन देन इट विल बी ओके, बट इट्स बेटर टू राइट एट द फर्स्ट लॉट. और ये 2 रूट 2 पीछे चला गया. अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे. इसको रैशनलाइज कैसे करना है? वही सेम मेथड. रूट 5 माइनस रूट 3, यहां पे साइन चेंज होना क्योंकि ये अब सिंगल टर्म बन गई. ये साइन चेंज आके आएगा, ये आएगा माइनस 2 रूट 2 ओवर दिस विल बी एज इट इज, और यहां पे आ गया माइनस 2 रूट 2. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है हाउ टू रैशनलाइज इट. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड फॉर द कैलकुलेशन. 2 will multiply all these 3 terms. 2. Now we have root 5 minus root 3 and this minus 2 root 2. I hope it's clear to you. Now these two will multiply. Here we will apply same method. A plus B, A minus B, which gives you A square minus B square. I hope it's clear. Numerator as it is, root 5, root 3, 2 root 2 over. Now it is in the form of A minus B whole square. So which is A square plus B square minus 2A into B. And this minus 2 root 2 square आप करेंगे, it will be 8. वो हमने यहाँ पे देख लिया है. 2 root 5 root 3 2 root 2 over root 5 square means 5, root 3 square means 3 minus 2 into root 5 into root 3 2 root 15, root 5 into root 3 root 15 and minus 8 as it is. I hope आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है. Now 5 plus 3 gives you 8 and minus 8 cancels. Let's see what is left with us. 2 root 5 minus root 3 minus 2 root 2 and denominator में it will be minus 2 root 15. I hope it's clear. Now 2 and 2 cancel. Move further. Now radical sign is in the denominator. That means we need to again rationalize it. Just think, in my first lecture I told you, you need to rationalize when there is an irrational term in the denominator. That is a radical sign. So here same concept we will be applying.
We have radical sign in the denominator, that means we need to rationalize it. अब जब इसको रैशनलाइज करना है माइनस नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ रूट 15 टर्म जाएगी. सो हियर इज द रैशनलाइजेशन. लेट्स मल्टीप्लाई रूट 15 इंटू रूट 5, रूट 75. रूट 15 इंटू रूट 3, रूट 45. माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 15, माइनस 2 रूट 30. ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल. 2 as it is, root 2 into root 15, root 30 over minus as it is, root 15 multiplied by root 15, 15. I hope it's clear to you. Now, further. This negative sign, better to change, shift it to a numerator. Denominator में रखोगे, even then it will be okay, but better to shift it to the numerator. When I shift this minus sign to the numerator, the all signs will change. That means this will become negative, positive, positive. So positive वाली terms I'll write at the first position, root 45 plus 2 root 30, and this negative term I'll write at the end. I hope it's clear to you. Over 15 now, because negative sign has been shifted to the numerator. Now root 45. Root 45 means 3 into 3 into 5. 45. 3 into 3 into 5. So 3 comes out, so it will be 3 root 5 minus 2 root 30 as it is, plus minus 75. 75 means 5 into 5 into 3. So 5 comes out, so 5 root 3 over root 15. So students, this is the solution of this question, in which you will be getting 3 terms in the denominator. How to rationalize it? You will be combining 2 terms and then rationalize it, but be careful, here you need to rationalize twice, one at this position and another at the last, when you will get this radical sign in the denominator. So students, I hope you got this question. Please keep on following my channel. Do take care of yourself. Thank you very much.